नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं पल्लवी कलिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ ई कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी आलोक भाग 2 के अंतर्गत 8वें अध्याय का जो है पदत्रय। पदत्रय अर्थात पद और त्रय माने तिनिटा। पदत्रय के रचयिता है मीराबाई अर्थात आमी यात मीराबाई द्वारा रचित तिनिटा पद पाम। मीराबाईर द्वारा रचित पदসমূहলৈ যোৱাৰ আগতে আমি मीराबाईर জীৱনীটো অলপমান চাওঁ আহাচোন। मीराबाई मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के आसपास प्राचीन राजपूताने के अंतर्गत मेरता प्रांत के कुड़की नामक स्थान में राठौर वंश की मेरतीय शाखा में हुआ था। मीराबाईर को जन्म হৈছিল 1498 आसपास ওচৰে পাজৰে তাৰমানে সঠিক চনটো নাই কিন্তু তাৰ আশে-পাশে জন্ম পাইছিল তেখেত प्राचीन राजपूतानेर अंतर्गत मेरता प्रांतर की হৈছে कुड़की नामक स्थाনত जन्म হৈছিল কোন स्थान में राठौर वंश की मेरतीय शाखा में हुआ था। बचपन में ही माता के निधन होने और पिता राव रत्न सिंह के भी युद्धों में व्यस्त रहने के कारण बालिका मीराबाई का लालन पालन उनके दादा राव दूदाजी की देखरेख में हुआ। কি হৈছিলে মাকৰ বচপনতে মৃত্যু হৈছিলে আৰু দেউতাক ৰাও ৰত্ন সিং কি আছিলে যুদ্ধত ব্যস্ত আছিল আৰু সেইভাবে বালিকা মীৰাৰ লালন পালন কোনে কৰিছিল দাদাজি ৰাও দুদাই কৰিছিলে। কৃষ্ণ ভক্তি मीराबाई বুলি ক'লে আমি कृष्ण भक्तिটো হয় ने আমি জানো। सोआ हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कवयित्री मीराबाई को महाकवि सूरदास जी के बाद ही स्थान प्राप्त है, जबकि हिंदी कवयित्रियों में उनका स्थान अग्रणी है। तार माने जिमान कृष्ण भक्ति काव्यधारार कवि আছে সকলোৰে ভিতৰত মানে কি হৈছে কवयित्री বিলাকৰ ভিতৰত কवयित्रीৰ ভিতৰত मीराबाईৰ কি হৈছে सूरदासৰ পিছতে মানে দ্বিতীয় স্থান কিন্তু কवयित्री হিচাপে তেখেতৰ স্থান अग्रणी আগত আছে। सो परम कृष्ण भक्त दादाजी के साथ रहते रहते बालिका मीरा के कोमल हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित होकर बढ़ने लगा। সৰুৰ পৰাই কাৰ লগত ডাঙৰ হল ককাকৰ লগত আৰু ককাক परम कृष्ण भक्त আছিল। সৰু ল'ৰা ছোৱালী কি হয় যেটো দেখে হেতু বেছিকৈ শিকে হয় না আৰু ককাকক দেখা পাইছিলে কৃষ্ণ ভক্তি কৰা সেই কাৰণে বালিকা মীৰাৰো মনত সৰুৰ পৰাই কৃষ্ণ ভক্তিৰ বীজ অংকুৰিত হ'বলৈ ধৰিলে। आगे आपने कृष्ण जी को ही अपना आराध्य प्रभु एवं पति मान लिया। विवाह सन 1516 में मेवाड़ के महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ। 1516 কি হল মেৱাৰ के महाराजा सांगार ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराजৰ লগত मीराबाईৰ विवाह হল। किंतु की हो स्वासोन दुर्भाग्यवश विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज जी का स्वर्गवास हो गया। राजपूतों की तत्कालीन परंपरा का विरोध करते हुए क्रांतिकारिणी मीरा सती नहीं हुई। हे সময়ত राजपूতৰ परंपरा কি আছিল সতীদাহ প্ৰথা সতী প্ৰথা আছিল নাই গটিকে গিৰিয়েকৰ লগত তেওঁ সতী যাব লাগিছিল কিন্তু কি কৰিলে তেওঁ परंपरा का विरोध কৰিলে আৰু क्रांतिकारिणी मीरा सती নহল। वे जग सुहाग को मिथ्या और अविनाशी प्रभु कृष्ण जी को सत्य मानती थी। কি কৈছে जग सुहाग जग মানে সংসাৰৰ কাৰণে তেওঁৰ পতি কোন আছিল ভোজৰাজ আছিল কিন্তু হেতু তেওঁ মিথ্যা বুলি কৈছিল তাৰ মানে তেওঁৰ মনেদি শ্ৰীকৃষ্ণক তেওঁ পতি মানি লৈছিল গটিকে কি কৰিছিল জগ সুহাগ অৰ্থাৎ সংসাৰৰ বাবে তেওঁ সেই কাৰণে সতী নহল কাৰণ তেখেতৰ মনত কি আছিল শ্ৰীকৃষ্ণ আছিল আৰু জগ সুহাগক তেওঁ মিথ্যা বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে বা মিথ্যা বুলি ভাবি ললে আৰু কি কৰিলে অবিনাশী অবিনাশ মানে যাৰ বিনাশ নাই হয় না নহয় গটিকে প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ কোনো বিনাশ নাই সেই কাৰণে কৈছে যে অবিনাশী প্ৰভু কৃষ্ণ जी को सत्य मानती थी। रचनाएं कवयित्री मीराबाई की रचनाओं में प्रामाणिकता की दृष्टि से कृष्ण भक्ति परक लगभग 200 फुटकर पद ही विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये फुटकर पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्ध है।
ये पद कवयित्री मीराबाई के कृष्ण भक्तिमय हृदय के स्वतः उद्गार है। स्वतः माने निजे निजे जिबिला भाव আমাৰ ওলাই সেই ভাৱসমূহৰে কি হৈছে ইয়াতে বৰ্ণনা পোৱা যায়। শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতি যিখিনি তেওঁৰ অন্তৰত ভক্তি আছিলে। भाषा उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी की उपभाषा राजस्थानी में काव्य रचना की है, परंतु उसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती आदि के भी शब्द मिल जाते हैं। मृत्यु प्रसिद्ध है कि द्वारका धाम के श्री रणछोड़ जी के मंदिर में अपने प्रभु गिरिधर गोपाल का भजन कीर्तन करते करते सन 1546 के आसपास वे भगवान की मूर्ति में सदा के लिए विलीन हो गई। प्रसिद्ध है तार माने प्रसिद्ध আছে যে মানুহৰ বিশ্বাস আছে বা লোক বিশ্বাস মতে কি হৈছে যে তেখেতে কি কৰিছিলে দ্বাৰকা ধামত শ্ৰী ৰণছোৰ মানেও শ্ৰীকৃষ্ণ হয়নে নহয় শ্ৰীকৃষ্ণৰ মন্দিৰত ৰণছোৰ জি কে মন্দিৰৰ কি হৈছে মন্দিৰ में अपने प्रभु गिरिधर गोपाলৰ ভজন কীৰ্তন কৰি কৰি কি কৰিছে হেখত 1546 সনত তেখেতে কি হৈছে आसपास में भगवान की मूर्ति में যেন ভগৱানৰ মূৰ্তিতে সদাৰ বাবে বিলীন হৈ পৰিলে। এতিয়া আমি मीराबाईर पदসমূহলৈ যাওঁ আহাচোন। 1 নম্বৰ পদটো কি আছে চোৱা मैं तो चरण लगी गोपाल जब लागी तब को न जाने अब जानी संसार कृपा कीजिए दर्शन दीजिए सुध लीजिए तत्काल मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार। এটা চোৱা চৰণ লাগি মানে হৈছে চৰণত শৰণ লোৱা তাৰ মানে শৰণাপন্ন হোৱা হয়নে গোপাল অৰ্থাৎ গোপালক শ্ৰীকৃষ্ণ কৃপা মানে কৃপা সুধ মানে খবৰ লোৱা গিৰধৰ মানে হৈছে গোবৰ্ধন পৰ্বত ধাৰণ কৰা শ্ৰীকৃষ্ণ গোবৰ্ধন পৰ্বত ধাৰণ কৰিছিলে সেইবাবে তেখেতক গিৰিধৰ বুলিও কোৱা হয় কৌ মানে কোনোৱে আৰু বলিহাৰ মানে হৈছে সমৰ্পণ কৰা বা ন্যৌছাৱাৰ करना। এটা চোৱা কি কৈছে मैं तो चरण लगी गोपाल শ্ৰীকৃষ্ণক কৈছে নিজৰ আৰাধ্যক কৈছে যে मैं तो चरण लगी गोपाल মইতো তোমাৰ চৰণত শৰণাপন্ন হলো जब लागी तब को ना जाने যেতিয়া তোমাৰ শৰণলৈ আহিছিলো তেতিয়া কোনেও কিন্তু গম পোৱা নাছিল কেতিয়া আহিছিল সেই সৰু অৱস্থাতে হয়নে যেতিয়া ককাকৰ লগত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভক্তিৰ বিষয়ে তেওঁ গম পাইছিলে তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ মনত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভক্তিৰ বীজ অংকুৰিত হৈছিল সেইভাবে কৈছে যে যেতিয়া মোৰ অন্তৰত তুমি সুমালা বা তোমাৰ প্ৰতি মোৰ যেতিয়াৰ পৰা ভক্তি আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া কিন্তু কোনেও গম পোৱা নাছিলে अब जानी संसार এতিয়া কিন্তু সংসাৰখনে গম পালে কিয় চোৱা কাৰণ তেওঁ সতি নহয় তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভক্তি কৰি থাকিল গতিকে এতিয়া কি হ'ব তাৰ মানে গোটেই সংসাৰখনে গম পালে যে मीराबाई কাক আৰাধনা কৰে বা मीराबाई কাক पति হিচাপে মানি লয় শ্ৰীকৃষ্ণক সেই কাৰণে কৈছে যে मैं तो चरण लगी गोपाल जब लागी तब को ना जाने अब जानी संसार कृपा कीजिए এতিয়া কি কৰিবা কৃপা কৰা মোৰ ওপৰত কৃপা कीजिए दर्शन दीजिए दर्शन মানে হৈছে দৰ্শন দিয়া মোক দৰ্শন দিয়া सुध लीजिए तत्काल सुध মানে খবৰ লোৱা মোৰ খবৰ লোৱা तत्काल অতি শীঘ্ৰে মোৰ খবৰ লোৱা কাক কৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ কৈছে যে তুমি মোৰ অতি শীঘ্ৰে খবৰ লোৱা मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार मीराই কি কৈছে যে হে প্ৰভু গিৰধৰ নাগৰ মই তোমাৰ চৰণতে নিজৰ সৰ্বস্ব সমৰ্পণ কৰিলো এই পদৰ অৰ্থ এইটো হৈছে যে মই তোমাৰ চৰণলৈ আহিছিলো যেতিয়া আৰু যেতিয়া আহিলো তেতিয়াতো কোনেও গম নাপালে এতিয়া সকলোৱে গম পালে গতিকে এতিয়া মোৰ খবৰ লোৱা তুমি হয়নে মোক দৰ্শন দিয়া আৰু মোক কৃপা কৰা মই তোমাৰ চৰণক নিজকে সমৰ্পণ কৰি দিছো ইয়াৰ অৰ্থটো অলপ চাও হাসুন मीरा कहती है कि वह तो बचपन से ही श्री कृष्ण के चरणों में लगी हुई है उस समय उनके प्रेम और भक्ति को कोई नहीं समझ पाया लेकिन अब पूरा संसार जानता है मीरा प्रभु से विनती करती है कि वे उन पर कृपा करे दर्शन दे और तुरंत उनकी सुध ले अंत में वह कहती है कि वह अपने प्रिय गिरधर नागर के चरण
कमलों में अपने को न्योछावर कर चुकी है। এতিয়া আমি দ্বিতীয় পদটোলৈ আগবাঢ়ো আহা। म्हारे घर आवो सुंदर श्याम तुम आया बिन सुध नहीं मेरो पीड़ी पड़ी जैसे पान म्हारे आशा और न स्वामी एक तिहारो ध्यान मीरा के प्रभु वेग मिलो अब राशो जी मेरो मान। এটা অৰ্থখিনি চোৱা। म्हारे মানে হৈছে আমাৰ, বিন মানে অবিহনে, সুধ চেতনা, পিৰি মানে হালধীয়া, আশা মানে হৈছে আশা, ন মানে নহয় বা নাই, তিহাৰো তোমাৰ, বেগ মানে শীঘ্ৰে, ৰাসো মানে ৰক্ষা কৰা, আৰু মাৰ মানে হৈছে সন্মান। কি কৈছে যে म्हारे घर आवो सुंदर श्याम, এই 2 নম্বৰ পদটোত মীৰাবায়ে নিজৰ ঘৰলৈ আমন্ত্ৰিত কৰিছে কাক? প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণক, যে মোৰ ঘৰলৈ আহা সুন্দৰ শ্যাম, আমাৰ ঘৰলৈ আহা সুন্দৰ শ্যাম, তুম আয়া বিন সুধ নেহি मेरो, তুমি যে অহা নাই তাৰ বাবে মোৰ হোশ নাই, মই যেন বেসুধ হৈ গৈছো, মোৰ কি হৈছে, তোমাৰ অবিহনে মোৰ চেতনা নাই। পিৰি পাৰি জেসে পান, পান মানে কি? পান, পান যে তামোল পান, এই পান, মোৰ শৰীৰটো কেনেকুৱা হৈছে, যেন পকা পানৰ নিচিনা মোৰ শৰীৰটো হালধীয়া পৰি গৈছে, অৰ্থাৎ মই যে নিস্তেজ হৈ পৰিছো, তেনেকুৱা অৱস্থা এটা মোৰ হৈছে, সেইবাবে মোৰ ঘৰলৈ, আমাৰ ঘৰলৈ সোনকালে আহা। म्हारे आशा, आशा মানে আশা, म्हारे মোৰ বেলেগ আৰু আশা নাই, और न स्वामी আৰু কোনো স্বামীও নাই, মোৰ একমাত্ৰ কি আছে, এক তিহাৰো ধ্যান, একমাত্ৰ তুমিয়ে মোৰ ধ্যানত আছা, মোৰ বেলেগৰ প্ৰতি কোনো ধ্যান নাই, গতিকে তুমি কি হয় আমাৰ ঘৰলৈ আহা। मीरा के प्रभु वेग मिलो अब, वेग মানে অতি শীঘ্ৰে মোক লগ কৰা, মোক দৰ্শন দিয়া, মোক লগ কৰা এবাৰ, আৰু ৰাসো জি मेरो মান, মোৰ সন্মান ৰক্ষা কৰা, হয়নে? কাৰণ ৰাজঘৰানাৰ পৰাও মীৰাক কঠোৰ শাস্তি বা অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে, সতী নহল, গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ শাস্তি তেওঁ ঘৰৰ পৰাও পাই আছিলে, হয়নে? কাৰণ ৰাজঘৰানাৰ বোৱাৰী, সেইবাবে কৈছে যে म्हारे घर आओ, দ্বিতীয় পদটোত এইটো কৈছে যে আমন্ত্ৰিত কৰিছে, মোৰ ঘৰলৈ, আমাৰ ঘৰলৈ আহা, তাৰ পিছত মোৰ তোমাৰ অবিহনে মোৰ কি হৈছে, মই পকা পানৰ নিচিনা হালধীয়া পৰি গৈছো, মই বেসুধ হৈ গৈছো, মোৰ বেলেগ আশা ভৰসাৰ থল নাই একমাত্ৰ তোমাৰ বাহিৰে, সেইবাবে মোৰ ওচৰলৈ সোনকালে আহা, আৰু মোৰ মানৰ বা মোৰ সন্মান ৰক্ষা কৰা। অৰ্থখিনি চাওঁ আহা। मीरा अपने सुंदर श्याम श्री कृष्ण को घर आमंत्रित करते हुए कहती है कि आपके बिना मुझे कोई सुध बुध नहीं है। उनके अर्थात कृष्ण, उनके विरह में मीरा पके पान की तरह पीली पड़ गई है। मीरा के मन में कोई और आशा या स्वामी नहीं, बस कृष्ण का ही ध्यान है। मीरा कहती है कि हे मेरे प्रभु, अब जल्दी आकर मिलिए और मेरे मान की रक्षा कीजिए। এতিয়া আমি 3 নম্বৰ পদটো চাওঁ হা। राम नाम रस पीजय मनुआ, राम नाम रस पीजय, तज कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजय। काम क्रोध मोह मद लोभ मोह को बहा चित्त सु दीजय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रंग में भीजे। ইয়াৰ অৰ্থসমূহ চোৱা। পিজে মানে হৈছে পিয়া, মনুৱা মানে মানুহ, তজ ত্যাগ, কুসংগ বেয়া সংগ, নিত মানে সদায়, চূৰ্ণ শুনা, বাহা চিত্ত সু দিজে মানে হৃদয়ৰ পৰা দূৰ কৰি দিয়া, আৰু ৰং মে ভিজে মানে হৈছে প্ৰভু কৃষ্ণৰ ৰং ৰসেৰে তিতি যোৱা, তাৰ মানে সৰাবৰ হৈ উঠনা। এতিয়া চোৱা কি কৈছে, ৰাম নাম ৰস পিজে মনুৱা, সকলো মানুহকে মীৰাবাই আহ্বান কৰিছে, কিহৰ বাবে? ৰাম নামৰ ৰস, অৰ্থাৎ কৃষ্ণ নাম মানে ভক্তি ৰসৰ বাবে আহ্বান জনাইছে, কৈছে যে ৰাম নাম ৰস পিজে মনুৱা, আহা সকলোৱে আমি ৰাম নামৰ ৰস পান কৰো। ৰাম নাম ৰস পিজে, তজ কুসংগ, তজ মানে ত্যাগ কৰা, কুসংগ মানে বেয়া সংগ আমি সকলোৱে ত্যাগ কৰো, সৎসংগ ভাল সংগত বহি, নিত সদায়, হৰি চৰ্চা শুনিলি যে সদায় আমি হৰিৰ চৰ্চা শুনো, তাৰ মানে আমি ভাগৱত কৰো, বা কি হৈছে আমি নাম ধৰ্মত আহো, আমি হৰিৰ চৰ্চা শুনো, আমি য'ত আমি নাম ভক্তি, আমি ভক্তি কৰিব পাৰো, হয় নে নহয়?
কাম ক্ৰোধ মদ লোভ মোহকো এইকেইটা হৈছে আমাৰ 6টা ৰিপু এই 6টা কি হৈছে আমাৰ শত্ৰু যেতিয়া আমি কাম ক্ৰোধ থাকিব খং অহংকাৰ থাকিব তেতিয়া কি হয় আমি সেইবিলাক যদি আমি এৰিব পাৰো তেতিয়া আমি হৰি ভক্তি লীন হ'ব পাৰিম হৰি ভক্তিত সেইবাবে কৈছে যে এই সমূহ বাহা চিত্ত সো দিজে হৃদয়ৰ পৰা দূৰ কৰি দিয়া যিমান বেয়া ৰিপু আছে বেয়া ভাৱ আছে সেই সমূহ दूर करा और हरि चर्चा सुन लीजिए मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरार प्रभु कोन আছিল गिरधर नागर माने श्री कृष्ण ताही के रंग में भीजे तेरे रंग में भीजना मतलब श्री कृष्ण रंग रखेरे तिति जोआ तार माने श्री कृष्णर भक्तित लीन হৈ পৰা এই পদত শ্ৰী কৃষ্ণৰ ভক্তি অৰ্থাৎ ভক্তিৰ প্ৰতি মানুহক আহ্বান জনাইছে বা সজাগ কৰিব বিচাৰিছে যে সকলো বেয়া এৰি আমি সৎসংগত বহি সকলোৱে হৰিৰ চৰ্চা শুনিব লাগে বা কৰিব লাগে ইয়াৰ অৰ্থখিনি চাওঁ আহা मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के नाम का रस पीकर अर्थात निरंतर स्मरण करे हाँ बुरी संगति छोड़कर भक्ति सत्संग में जुड़े मन से विकारों को निकाल दे और राम व कृष्ण है ना के प्रेम भक्ति और रंग में रंग जाए यही जीवन की सच्ची साधना और आनंद है মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই তিনিটা আছিল মীৰাবাই দ্বাৰা বিৰচিত পদ্যয় আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা অৰ্থসমূহ তোমালোকে ভালদৰে চাবা এতিয়া আমি ইয়াৰে প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানলৈ আগবাঢ়ো আহাচোন बोध एवं विचार हाँ या नहीं में उत्तर दो हाँ बा नहीं स्वा कौतु हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कवयित्री मीराबाई का स्थान सर्वोपरि है কি কৈছে কৃষ্ণ ভক্তি কাব্যধাৰা মে কৱয়িত্ৰী মীৰাবাই কা স্থান সৰ্বোপৰি আছিল নে সৰ্বোপৰি সুৰদাসৰ পিছত আছিল স্থানটো কৱয়িত্ৰী হিচাপেহে তেখেতৰ অগ্ৰণী আছিল কিন্তু যেতিয়া কাব্যধাৰা আহে তেতিয়া কিন্তু সুৰদাসৰ পিছত দ্বিতীয় স্থানটোহে মীৰাবাই আছিল গতিকে কি হ'ব এটো नहीं খটো সোৱা কৱয়িত্ৰী মীৰাবাই ভগৱান শ্ৰী কৃষ্ণ की अनन्य आराधिका थी হয় না নহয় আসিলে কি হব हां अनन्य आराधिका थी गौतुस्वा राजपूतों के तत्कालीन परंपरा का विरोध करते हुए क्रांतिकारिणी मीरा सती नहीं हुई হয় না নহয় হয় তেও সতী হৈছিল নে নাই হোৱা গটিকে এটো উত্তৰ শুদ্ধ खटुस्वा मीराबाई अपने को श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में पूरी तरह समर्पित नहीं कर पाई थी एटो एकेबारे नहुआ कथा হয় না একেবাৰে তেওঁ কি কৰিছে নিজকে সৰ্বস্ব সমৰ্পণ কৰি দিছিল গটিকে ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব নেহি কাৰণ তেওঁ সৰ্বস্ব সমৰ্পণ কৰিছিল এতিয়া সংগতো मीराबाई ने सुंदर श्याम जी को अपने घर आने का आमंत्रण दिया है आमंत्रण दिছিল নে আমি গম পাইছো কি দিছিলে आमंत्रण কৰিছিলে গটিকে এটো কি হ'ব हां 2 नंबर स्वा पूर्ण वाक्य में उत्तर दो कवयित्री मीराबाई का जन्म कहां हुआ था कोट হৈছিলে मीराबाई जन्म स्वा कवयित्री मीराबाई का जन्म प्राचीन राजपूताने के अंतर्गत मेरता प्रांत के कुर्की नामक स्थान में हुआ था खतुस्वा भक्त कवयित्री मीराबाई को कौन सी आख्या मिली है की आख्या पाइছিলে भक्त कवि कवयित्री मीराबाई की पाइছিলে मीराबाई भक्त कवयित्री मीराबाई को कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या मिली है मीराबाई के कृष्ण भक्ति परक फुटकर पद किस नाम से प्रसिद्ध है स्वा मीराबाई के कृष्ण भक्ति परक फुटकर पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्ध है खटुस्वा मीराबाई के पिता कौन थे তেওঁৰ দেউতাক কোন আছিলে मीराबाई के पिता कौन आसिले राव रत्न सिंह मीराबाई के पिता थे कवयित्री मीराबाई ने मनुष्यों से किस नाम का रस पीने का आह्वान किया है की नाমৰ ৰস पान কৰিবলৈ কৈছিলে कवयित्री मीराबाई ने मनुष्यों से राम नाम का रस पीने का आह्वान किया है बा राम नाम रस पीने का आह्वान किया है 3 नंबर स्वा अति संक्षिप्त उत्तर दो मीरा भजनों की लोकप्रियता पर प्रकाश डालो मीरा भजनों लोकप्रियता
তাৰ ওপৰত প্ৰকাশ কৰিব মানে প্ৰকাশ ডালিব দিছে যে লোকপ্ৰিয়তা কিয় আছিল বা কেনেদৰে আছিল চাওঁ আহাচোন हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कवयित्री मीराबाई का स्थान महाकवि सूरदास जी के बाद ही है उनके द्वारा विरचित गीत पदों में कृष्ण भक्ति भावना और कृष्ण प्रेम रस अत्यंत सहज और सुबोध भाषा में अभिव्यक्त है उनके भजन कबीर सूरदास और तुलसीदास के भजनों के समकक्ष थे उन भजनों को आज भी श्रद्धा सहित गाए जाते हैं हने एतियो मीरा भजन गाय সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰে इसी से उनके भजनों की लोकप्रियता का पता चलता है खटुसवा मीराबाई का बचपन किस प्रकार बीता था केनेदरे তেওঁৰ সৰু কালটো বা बचपनটো पार হৈছিল স্वा मीराबाई का बचपन उनके दादा राव दूधा जी की देखरेख में बीता था क्योंकि बचपन में ही मीराबाई की माता का निधन हुआ था और पिता राव रत्न सिंह भी युद्धों में व्यस्त थे कृष्ण भक्त दादा राव दूधाजी के साथ रहते रहते बालिका मीरा भी अपने हृदय में कृष्ण भजन करने लगी थी गौतुस्वा मीराबाई का देहावसान किस प्रकार हुआ था केनेदरे मृत्यु হৈছিলে কি হৈছে कवयित्री मीराबाई के पति भोजराज जी का स्वर्गवास हो जाने के बाद उस समय के प्रचलित परंपरा का विरोध करती हुई मीरा सती नहीं हुई प्रसिद्ध है कि वे प्रभु गिरधर नागर की खोज में राजप्रासाद से निकल पड़ी और द्वारका धाम के श्री रणछोड़ जी के मंदिर में अपने आराध्य पति कृष्ण का भजन करते करते भगवान की मूर्ति में सदा के लिए विलीन हो गई खटुस्वा कवयित्री मीराबाई की काव्य भाषा पर प्रकाश डालो कवयित्री मीराबाईर काव्य भाषार ऊपৰত दृष्टिपात কৰিব দিছে বা চাব দিছে কি হৈছে স্वा प्रकाश डालाओ मीराबाई ने हिंदी की उपभाषा राजस्थानी में काव्य रचना की है किहत কৰিছে उपभाषा राजस्थानी में काव्य रचना की है इसमें ब्रज खड़ी बोली पंजाबी गुजराती आदि के भी शब्द मिल जाते हैं काव्य भाषा की सांगीतिक लय के कारण उनके भजन गीत सबके प्रिय रहे हैं और रहेगी তেওঁৰ কিছে काव्य भाषात सांगीतिक लयটো আছে আৰু সেইভাবে তেওঁৰ সকলো ভজন গীত কি হৈছে সকলোৰে প্ৰিয় আছিল এতিয়াও আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈও থাকিব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল আজি আমি পত্ৰটোৰ প্ৰশ্নখিনি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নখিনি নেক্সট ক্লাছত আমি আকৌ দিম আজিলৈ আহো তোমালোক ভালদৰে থাকিবা ধন্যবাদ